Good morning and Jai Hind students. In the continuation of our second chapter, we are going to study about the behavior of conductor, electrical capacitance, principle of capacitance, capacitance of parallel plate capacitor, series and parallel combination, energy stored and energy density, energy stored in series and parallel combination of capacitors, loss of energy sharing between two capacitors, polar and non-polar molecules, what is meant by polarization, polarizing vector, dielectric strength, and parallel plate capacitor with dielectric slab, and at last we will study about the Van de Graaff generator. So I am Mukund Manas, your physics teacher. So today I am going to start with the new topic, that is capacitor. So let's start that capacitor, but before beginning that, we just have to study about some behavior of conductor in the electrostatic field. What does it mean? How the conductors behave? This all I have to study, which will be summarizes in 5 to 6 points. So starting with the first, that is net electric field intensity in the interior of a conductor is 0, which means that suppose there is a conductor of this shape, it could be of any shape, and you have applied the electric fields, but these electric fields cannot be present inside the conductor. That means electric field at this point will be 0 inside the conductor. This is all about, which is shown in this figure. Suppose this is a conductor and you have applied a electric field by means of electric field lines, positive plates, negative plates, and electric field, as we know that the from positive charge electric field go outside, and for negative charges electric field come inside. That means they terminate at the negative charge and emanate from the positive charges. So what we are going to observe is that electric field inside this is 0. But why sir, why electric field is inside 0? The reason is, when a conductor is placed in an electrostatic field, the charges, the free electrons of inside the conductor, they arrange themselves in such a way that the positive plate is attracts the negative charges of the conductor, and the positive charges of the conductor will be attracted by the negative plate. So what does it mean, sir? This means is that they are drifting towards the positive plate and leaving the positive core behind. पॉजिटिव कोर को पीछे छोड़ के नेगेटिव वाले जितने भी थे वो सारे के सारे पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो गए. तो इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से एक फिनोमेना होता है दैट इज़ नोन एज द पोलराइजेशन. एट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन बिकम्स इक्वल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड पोलराइजेशन की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विच इज़ डिनोटेड हेयर एज ई ये प्रोड्यूस हो जाएगी. सो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, दैट ई नॉट विच इज़ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो उसके बराबर हो जाएगी. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0. कहाँ पर? इनसाइड द कंडक्टर. सो द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0. दिस वॉज ऑल अबाउट. मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, electric field just outside the charged conductor is perpendicular to the conductor. जो भी सरफेस होगी कंडक्टर की, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, हेयर एट सरफेस देर इज अ चार्ज प्लस q which is greater than 0. It's a direction of electric field and normal of that electric field is this n cap. To prove this, that electric field just outside the charged conductor is perpendicular, we make assumption that let it is at an angle of theta. That means we are proving it by making an assumption contrary to the normal phenomena. Suppose we are going to just say that there is an electric field which makes at an angle theta, whose component will be e cos theta.
सरफेस पे चार्ज है हमारे पास यहाँ पर, इसका नॉर्मल आपको एन कैप यहाँ दिखाया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक बात है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एट एन एंगल थीटा पर है। तो जब थीटा एंगल पर है, सो इट विल डेफिनेटली मेक अ कॉम्पोनेंट दैट इज ई कॉस थीटा. So it will, then there will be a component e cos theta acting along the tangent at that point to the surface, which tended to accelerate the charge. And from the beginning of this chapter I am saying that, continuously saying that you have to move the charge, but it should not be accelerated at any point of time. दैट मीन्स आपका चार्ज मूव करेगा, आपको वर्क डन करना है, आपको जो कुछ भी करना है, बट आपकी चार्ज में एक्सेलरेशन नहीं आनी चाहिए. लेकिन जैसे ही ये ई कॉस थीटा का कंपोनेंट आएगा इस चार्ज पर, इस चार्ज को ये एक्सेलरेट कराने की कोशिश कर जाएगा, लीडिंग टू, विच लीड्स टू एक्सेलरेट द चार्ज ऑन द सरफेस, जो क्या बनाएगा, लीडिंग टू सरफेस करंट. बट देर इज़ नो सरफेस करंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक. हमें सरफेस पर करंट की बात ही नहीं करनी है. इलेक्ट्रोस्टैटिक का पर्पस ही ख़त्म हो जाएगा. दैट मीन्स वी आर स्टडिंग अबाउट दोज चार्जेस विच आर एट स्टैटिक कंडीशन, और आई से दैट विच आर एट दी स्टेशनरी रेस्ट की कंडीशन पे चार्ज हैं. दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, cos 90 विल बी 0 डिग्री. सो इट्स दिस केस इज नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स it is always true that electric field just outside the charge conductor will be perpendicular to the surface of the conductor. तो जो हमने assumption मानी थी that is going to be wrong. Now third point is that net charge in the interior of a conductor is zero. ये क्या बात है? Suppose this is a conductor, this, and there is a charge which are polarized. नेगेटिव आपके एक तरफ हैं, पॉजिटिव आपके एक तरफ हैं. सो द चार्जेस आर टेम्पोरली सेपरेटेड. द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ज़ीरो. नेट चार्ज मीन्स दिस कंडक्टर वॉज इनिशियली न्यूट्रल. न्यूट्रल मीन्स वॉट? द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस. सो नेट चार्ज विल बी, नेट चार्ज विल बी इक्वल टू ज़ीरो. यही बात ये कह रहा है. इसको हम और कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हमें मालूम है कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, मीन्स फ्लक्स. दिस इज द सिंबल ऑफ फ्लक्स. सो फ्लक्स के थ्रू भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं. दैट फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट सरफेस विल बी इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. विच मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो है, दैट मीन्स ये क्वांटिटी आपकी ज़ीरो हो गई. सो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट विल ऑल्सो बिकम्स ज़ीरो, विच शोज दैट एप्सिलॉन नॉट कैन नॉट बी ज़ीरो बिकॉज फॉर एयर इट्स वैल्यू इज 8.854 10 to the power -12. तो ये होती है, एप्सिलॉन नॉट ज़ीरो हो नहीं सकता. दैट मीन्स चार्ज इज ज़ीरो इनसाइड द कंडक्टर. Coming to the next point, charge always resides on the surface of a conductor. चार्जेस जो कुछ भी होंगे वो हमेशा सरफेस पर ही होंगे. इफ़ यू वांट टू ऐड सम चार्जेस, सपोज दिस इज अ कंडक्टर विच इज हैंग्ड बाय अ लिटिल स्मॉल थ्रेड एंड यू हैव मल्टीपल चार्जेस एंड यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट चार्जेस इन द इनसाइड द एटम. आपको इसके अंदर आपको देना है ये चार्ज, लेकिन इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट चार्जेस विल ऑलवेज बी एट द सरफेस. जस्ट गिव इट. तो ये चार्जेस अपने आप को ऐसा एसिमुलेट करेंगे सो दैट ओनली सरफेस एरिया विल बी कवर्ड. इनसाइड चार्ज विल ऑलवेज बी ज़ीरो. ओके. सपोज अ कंडक्टर इज गिवन सम एक्सेस चार्ज q. कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस जस्ट इनसाइड द कंडक्टर. दिस डॉटेड लाइन इज नोन एज गॉसियन सरफेस. दिस इज द गॉसियन सरफेस. आपने कंस्ट्रक्ट किया, उस गॉसियन सरफेस के चारों तरफ आपके चार्जेस आ जाएंगे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो, देयरफॉर क्यू इनसाइड द कंडक्टर इज ऑल्सो ज़ीरो. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर एंटायर कंडक्टर. दैट मीन्स dv is equals to E dot dr. Now here is the important point which you have to note that
if we move in the direction of electric field, suppose this is the direction of electric field, here I have applied electric fields, and we are moving from this point, there is a person or a charge which is moving in this point. We know that electric potential is equals to kq by r, as the distance is inversely proportional to the potential. As the distance is increasing continuously, your potential will decrease. इसी बात को मैंने ये कहा कि जैसे जैसे आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाते हैं, जैसे जैसे लेके जाते हैं, आप लेके जाइए, ठीक बात है, लेकिन आपका जो पोटेंशियल होगा वो आपका डिक्रीज़ होता रहेगा. बट अगर आप किसी सरफेस पर बात कर रहे हैं, इफ़ यू हैव अप्लाइड potential to any surface, that means it will be of constant value. Since E is equals to 0 inside the conductor, therefore dV, putting E is equals to 0 in this, so E becomes 0, that means dV is equals to 0, and this will give rise to the equipotential surface which we have discussed earlier in the class. So V becomes constant. Coming to the next, surface charge distribution may be different at different points. Suppose this is a type of a conductor whose area is minimum at this point and whose area is maximum at this point. This is the area where surface area is minimum, and this is the area where surface area is maximum, and you distributed a charge. So the surface charge density will be maximum here because of the area is minimum. Why? Because surface charge density is the charge per unit area. If the area is small, your surface charge density automatically will be rise up. Here the area is minimum. Area is minimum, that means surface charge density will be maximum. Similarly here area is the maximum. If the area is maximum, sigma is inversely proportional to the area. Area is maximum, so your surface charge density will be minimum. Here it is written also that the surface charge density will be minimum. Okay, this one. So this is the property what I have told you. So these are the properties of conductors in electric field. In the next video we are going to start with the capacitance. What do you mean by capacitance? The device which stores the energy or charges, electrical energy, and capacitor. Till then, thank you and जय हिंद. आप सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और पढ़ाई करते रहिए. थैंक यू.